यस फ्रेंड्स, तो आज हम ले रहे हैं क्या सर्कल्स इन द सर्कल्स व्हाट आर सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, व्हाट इज इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। और व्हाट इज एक्स सर्कल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक्स सर्कल्स को हम एस्क्राइब्ड सर्कल्स भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशंस में अभी बताता हूँ, एक एक करके हम तीनों को लेते हैं। There are three types of circumcircles or incircles, or I mean we have to draw a circle inside the triangle or outside the triangle, or passing through all the three angular points or three vertices of a triangle known as circumcircle. There are three types of triangles, these three types of circles which can be drawn related to the triangle. Okay, that triangle may have inside the circle can have inside the triangle, or it can be passing through the three angular points, that is known as circumcircle, or X circle. X circle means which is out of the triangle. Okay, X circle, this is known as S-curved circle. इनके बारे में हम बातें करते हैं, इनकी डेफिनेशन सबसे पहले लूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन से का दो हैं। ओके, उसके बाद इनकी वैल्यूज क्या होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, इनको तीन टाइप्स की इन प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड। 8 फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ इन सर्कल से रिलेटेड कितने फॉर्मूले हैं, और सर्कम सर्कल से रिलेटेड केवल 2 फॉर्मूले हैं, इन सर्कल से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं, एस्क्राइब सर्कल और एक्स सर्कल से रिलेटेड भी 3 फॉर्मूले हैं। टोटल 8 फॉर्मूलेज पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, a brief description, not brief, it is detailed. Okay, so detailed discussion we will have regarding what are the circumcircles, what are the incircles, what are the X circles of a triangle. Okay, इसलिए तो हम स्टार्टिंग से करते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले circumcircle क्या होता है, what are the क्वेश्चन नंबर 1 ही कहता है what are the circumcircle, incircle and ascribed circles of a triangle. Right, it can be written here of a triangle. चलिए, ये है सर्कम सर्कल, इन सर्कल, दिस इज इन सर्कल हियर, इन सर्कल एंड एक्स सर्कल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हिंदी वर्जन। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं सभी को, जितने 13 क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड। व्हाट आर द, दिस इज विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ दी और टोटल डिटेल्ड डेफिनेशंस ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सर्कल्स। ओके, सर्कल्स हियर, एक्स सर्कल्स, सर्कम सर्कल्स और इन सर्कल्स, तीनों टाइप के सर्कल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट मी डिस्क्राइब दैट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है व्हाट आर द सर्कम सर्कल, व्हाट आर द सर्कम सर्कल, इन सर्कल एंड एक्स सर्कल्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स सर्कल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, लेट मी टेक कोई ट्रायंगल ABC है, उसके एक्स सर्कल्स क्या होते हैं, इंस्क्राइब सर्कल्स क्या होते हैं, ओके, और एक्स सर्कम सर्कल क्या होते हैं। लेट मी टेक अ ट्रायंगल ABC लाइक दिस, ABC ट्रायंगल आपने लिया, ठीक है। तो any circle which is passing through the angular points is known as circumcircle. Okay, अगर एक सर्कल एंगुलर पॉइंट्स में इनसे पास होता है उसको हम सर्कमसर्कल कहते हैं। ये है सर्कमसर्कल। ओके, इन सर्कल, ये इसका इन सर्कल है जो टच करता हुआ तीनों साइड्स को ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ किया जाता है। And how it is to be drawn, क्या क्या इसकी वैल्यूज होती हैं रेडियस की, what is in radius और in circle radius, what is circumcircle radius or circum radius known as, what is X circle radius or radii, so that we will discuss. This is in circle here, this is circumcircle, and what is X circle, एक ही फिगर में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर किसी एंगुलर पॉइंट ए के सामने इस को टच करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बट ये सर्कल हम कैसे करते हैं, इस सबसे पहले बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये बी और सी एंगल, ये बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं।
यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को लेके यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, इस साइड पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से साइड AB पर भी ड्रॉ किया, ABC पर, दिस इज C पॉइंट हियर, दिस इज B पॉइंट हियर। ओके, तो ये कहलाता है आपका, लेट मी टेक हियर E पॉइंट एंड दिस इज F पॉइंट। इसको हम I पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ये I1 है इस केस में। I1 क्यों? क्योंकि हम रेडियस R1 लेंगे। ये जो I1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, इसको हम रेडियस R1 लेते हैं, रेडियस R2 है ये, और ये रेडियस R3, और सॉरी ये भी R1 ही है, ये भी R1 है, आई एम सॉरी, मीन दिस इज इन केस अगर एंगुलर पॉइंट A के सामने अपोजिट साइड है BC के बाहर BC से टच करता हुआ अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं जो तीनों साइड्स को टच करता है, बट बाकी दो साइड्स को एक्सटेंड करने पर टच करता है, एक्सटेंडेड साइड AC which meets the circle will meet at point E। ओके, ये क्योंकि रेडियस है इसकी, इस रेडियस से पास करता हुआ ये टच करता हुआ इस टाइप से आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। द सर्कल विल टच ऑल द थ्री साइड्स बट एक्सटर्नली, ओके, एंड फ्रॉम external sides from outside this triangle, this is known as X circle। अब इस रेडियस इज R1, बट इफ अगर ये B एंगुलर पॉइंट B है, यहाँ पर B के सामने साइड AC पर को टच करती हुई ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसके इसमें R2 रेडियस हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, हम इसको डिस्कस करेंगे। I1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और तो उसके इसमें I2 होगा ये, तो अब रेडियस R2 हो जाएगा। अगर ये B पॉइंट है, अगर C के सामने करते हैं तो हम रेडियस R3 लेंगे। ओके, तो इस तरह से आप R1, R2, R3 3 रेडियाई और 3 सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। दे आर नोन एज एक्स सर्कल्स, उनको हम एक्स सर्कल्स, उनकी रेडियस सेम प्रोसेस है। अगर आप यहाँ A लेते हैं, A के सामने, तब रेडियस R1 लेते हैं। अगर ये B पॉइंट है, B एंगुलर पॉइंट के सामने अपोजिट साइड को टच करता है और बाहर से सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो एक्स सर्कल कहलाता है। उसकी रेडियस हम R2 लेंगे। अगर ये C पॉइंट होता है, C के सामने अपोजिट साइड हो गई, तो उसको ये AB लाइन को टच करता हुआ, साइड को टच करता हुआ सर्कल को ड्रॉ करते हैं सर्कल, उसके इसमें ये R3 रेडियस होता है। इस तरह से 3 टाइप के एक्स सर्कल्स होते हैं। और इन सर्कल जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइप का है। इन सर्कल ये जो सर्कल तीनों साइड को टच करता है ट्रायंगल की को, और एक्स सर्कल, सॉरी दिस सर्कम सर्कल एंगुलर पॉइंट को पास करता हुआ जाता है। लेट मी राइट हियर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? एनी सर्कल passing through the angular points of three angular points of a triangle। अब इन दिस केस हमने ले लिया है इसको AB से, तो आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, बट उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस और एंगुलर पॉइंट्स के पास होना चाहिए सर्कल, तभी हम उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। okay? तो ऑफ ए ट्रायंगल ABC in this case, okay, now in this case we are taking ABC triangle. It can be any triangle, PQR, okay, X by Z, whatever triangle's nomination or denomination has no any criteria. It can be done any way, either it is ABC, X by Z, PQR, so that is, but in this case any circle passing through the three angular points A, B, C, let me take here three angular points A, B and C of a triangle ABC, okay, ABC is known as circum circle, is known as circum circle,
of the triangle ABC. This is circumcircle. Okay, इसकी रेडियस को हमेशा कैपिटल आर से इन्वॉल्व करना है. The radius of this circle is denoted as capital R. सर्कम सर्कल की रेडियस को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये बात हुई सर्कम सर्कल की. नाउ व्हाट इज इन सर्कल? सेकंड पॉइंट, इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, a circle inside the triangle, inside the triangle, a circle inside the triangle which touches the three sides, all the three sides of the triangle. Okay, inside the circle, a circle inside a triangle, which touches all the three sides of the triangle is known as in circle of the triangle. समझ में आ गई आपकी बात? ओके, यू गॉट द पॉइंट. ये इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं. इस पर इन सर्कल तीनों साइड्स को टच कर रहा है. ए बी, इस केस में बी सी, ए सी और ए बी को, इसकी रेडियस को आप द रेडियस ऑफ दिस इन सर्कल, द रेडियस of the in circle is denoted as small r. इसको आप स्मॉल r से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये हो गया इन सर्कल. व्हाट आर द एक्स सर्कल्स? और जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया एक्स सर्कल्स के बारे में, वही डेफिनेशन होती है इन सर्कल. सर्कल भी हम डिस्क्राइब्ड. अब आते हैं एक्स सर्कल्स क्या होते हैं. हमने जैसे एक्स सर्कल्स बताया, इसकी डेफिनेशन लिख देते. सिंपल बात, ये है. तो आते हैं थर्ड पॉइंट, व्हाट इज एक्स सर्कल्स? एक्स सर्कल्स ऑफ ए ट्रायंगल. चलिए सर, circle drawn touching the triangle, the sides of the triangle, touching the sides of a triangle from outside is known as X circle or ascribed circle. Ascribed circle, which is drawn outside the circle. For example, in this case, if the circle is touching the side of BC, okay, at point D, let me take this is BC, side BC opposite to the angle A, angular point A, vertex A, angle, let me take angular point A or vertex A
ओके, अगर ये टच करता है BC साइड फॉर एग्जाम्पल, इस केस में BC को D पर टच करता है और एंगुलर पॉइंट A के सामने है, अपोजिट है, तो हम इसको एक्स सर्कल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। और व्हाट इज A, देन it will touch the other two sides, AB and AC extended at E and F. First I have taken AB, it is F and E respectively. ठीक है जी, अगर एंगुलर पॉइंट A के सामने है, अपोजिट साइड BC को टच करता है, तो AB और AC साइड्स को हम एक्सटेंड करते हैं, वो उस एक्सटेंडेड साइड को भी टच करेगा आउटसाइड से। इस ट्रायंगल को हम, इस सर्कल को आप रेडियस R1 के साथ डिनोट करते हैं respectively. Then the radius of this circle is denoted as R1, small r1. Okay, and if it is touching or if it is against the angular point B, then radius is R2, similar point. Okay, and it will touch the extended sides, other two sides, BC, okay, and BA. It will touch the extended side BC and BA, okay, extended sides, and will touch the side CB also, sorry, CA also. This is CA, ABC. In this case, B point will be here. Similarly, the other two circles, okay, against or opposite against the angular points B and C can also be drawn. Against the points, against the vertices, let me take, against the vertices B and C can be drawn, which will touch the triangle ABC. Okay, the triangle ABC from outside, ABC from outside, as in this case it is touching. Similarly, the other way, if it is R2 radius, then here B point will be there, and this is A, B, C, CA, this side will be CA, CA will be touched at point D, suppose. Okay, at E and F we will draw the same type of X circles in that case also, okay, from outside, and the radii of those X circles will be denoted as R2 and R3 respectively. सर ये सब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. A description regarding what are the in circles, circumcircles, in circles and X circles of a triangle. ये हमने डिस्क्राइब किया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या देता है. क्वेश्चन 2 में क्या डिस्क्रिप्शन में क्या डिमांड की है देखते हैं. देखा आपने किस तरह से एक्स सर्कल एंड सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल को हम डिफाइन करते हैं. अब इनके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो हम अभी नोट कर देंगे और डिस्क्राइब करने के बाद में. इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं 8 काइंड के फॉर्मूले हैं वो मैं लिख देता हूँ. व्हाट आर द फॉर्मूले?
Okay, what is the ortho center? Before describing ortho center, question number 2, let me write the formulae. Formulae which are very important for circumcircle. Sorry, this is circumcircle, incircle, and axis circles of a triangle. Let me take triangle is ABC of a triangle ABC. इसके 8 फॉर्मूले हैं, वो नोट करते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला है सर्कम सर्कल जिसकी कैपिटल R रेडियस होती है. उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला है ये A अपॉन साइन A, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C कैपिटल C इक्वल टू ट्वाइस R कैपिटल R. ये पहला फॉर्मूला है सर्कम सर्कल के लिए, यहाँ पर कैपिटल R रेडियस होती है सर्कम सर्कल की, सर्कम रेडियस. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला, ओके, सेकंड वन, ये हमने क्वेश्चन से हम सॉल्व किए हुए हैं, इसके बाद में डिस्क्राइब करेंगे. सेकंड है कैपिटल R रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस इक्वल टू ABC अपॉन 4 कैपिटल S. यहाँ पर ABC क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. A, B and C are the sides of the triangle or length of the sides of the triangle. Length of the sides of the triangle ABC in this case, and S is the area. S is the area of the triangle. Right? ये इनका डिस्क्रिप्शन. सेकंड कैपिटल R जो सर्कम सर्कल की रेडियस होती है उसका सेकंड फॉर्मूला ये है. ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सर्कम सर्कल के लिए. हम इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन निकालते हैं. ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है. अब आते हैं इन सर्कल के बारे में. दिस इज अबाउट सर्कम सर्कल. दिस टू आर ऑफ सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट. तो आते हैं इन सर्कल के बारे में. थर्ड formula, this is about in circle. In circle, what is third formula? Third formula is small r is equal to, let me take first third formula is small r, where r is in circle radius, radius of the in circle, or in radius, in circle radius में से, or radius of the in circle. This is r capital S upon small s. The small s is semi perimeter. This is here. Okay, this is R equal to capital S upon small s. This value is there. Where S is area of the triangle. Area of the triangle divided by semi perimeter. Small s is semi perimeter. Semi perimeter of the triangle. This is description of these two. Upon semi perimeter. So area of the triangle upon semi perimeter is equal to small r. Fourth formula. I mean third. This is the first formula for in circles, but in series it is third formula. Take the fourth one. Now small r and circumcircles radius. दोनों में रिलेशनशिप भी होती है. वो क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है r is equal to 4 capital R sin A by 2 sin B by 2 into sin C by 2. ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है और सेकंड फॉर्मूला है फॉर इन सर्कल के लिए, लेकिन फोर्थ इन सीरीज. ये फोर्थ फॉर्मूला विच इज इम्पोर्टेंट. ये रिलेशनशिप होगी किसमें? सर्कम सर्कल रेडियस और इन सर्कल रेडियस. इन सर्कल रेडियस को आप सर्कम सर्कल रेडियस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं. और ये एंगल ABC और सेमी एंगल से सेमी एंगल फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला हुआ. देन फिर फॉर्मूला I mean the third in series for in circles. Third formula है R is equal to, okay, this is R is equal to S minus A into tan A by 2, then capital A by 2 equal to S minus B into tan B by 2 capital equal to S minus C into tan
कैपिटल सी बाई टू। ये थर्ड फॉर्मूला हो गया इन सर्किल के लिए। ये हमने यहाँ लिख रखे हैं, सभी प्रूव किया है कैसे आए हैं इन सभी फॉर्मूले को। तीन, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया इन सर्किल के लिए। नाउ देयर आर 3 फॉर्मूले फॉर एक्स सर्किल्स ऑल्सो। एक्स सर्किल्स के लिए भी 3 फॉर्मूले हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, उनको लिखते हैं, नोट करते हैं, जिससे कि आप एक साथ इनको देख करके याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर देम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, नाउ फॉर इन सर्किल्स, सॉरी फॉर एक्स सर्किल्स। नाउ इन सर्किल्स के लिए 3 फॉर्मूले हो, देयर आर 3 फॉर्मूले फॉर इन सर्किल्स, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन सर्किल्स के लिए ये 3 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको हम सॉल्व भी करेंगे, प्रूव करेंगे कि हाउ दे आर रीच्ड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे और आपको याद हो सकते हैं, रट जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको आप बटन डाउन कीजिए, याद करिए, यू हैव टू रिमेंबर देम फॉर ऑलवेज सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, व्हाटएवर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं एक्स सर्किल्स के बारे में। अब एक्स सर्किल्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक्स सर्किल्स और दिस इज एक्स सर्किल्स। एक्स सर्किल्स सबसे पहला फॉर्मूला है, लेट मी टेक 6, 7, 8, टोटल 8 फॉर्मूले आते हैं। 3 फॉर्मूले जो बचते हैं 6, 7 और 8 वो हैं एक्स सर्किल्स के लिए, लेकिन इन पर भी दोनों सबके लिए एक एक होगा। R1 इज इक्वल टू, इसे फर्स्ट एक्स सर्किल which is against the angular point A. Okay, R1 is equal to, is given by S upon capital S upon S minus A, where capital S is area of the triangle, small s is semi-perimeter of the triangle. This is value of R1. R2 capital S upon S minus B, R3 capital S upon small s minus C. ओके, तो ये फॉर्मूले हैं एक्स सर्किल्स के लिए। तीनों रेडियस आप अलग अलग ले सकते हैं, R1, R2, R3, लेकिन इनकी वैल्यू S अपॉन S माइनस C, S अपॉन S माइनस B, S अपॉन S माइनस C। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं S की टर्म में। तो आती है सेकंड काइंड, सेकंड फॉर्मूला फॉर द सेम डेटा, दिस इज इक्वल टू, ओके, R1 इक्वल टू, if it is R1 then it is equal to S into 10A by 2. Yeah, it is 10A by 2, S into 10A by 2, R1 value, and R2 comma R2 equal to, this is R2 here, small s into 10 B by 2, R3 equal to small s into 10 C by 2. ठीक है जी, ये हो गया सेवंथ फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला इन फॉर एक्स सर्किल्स एंड सेवंथ इन सीरीज, सेवंथ फॉर्मूला, एट्थ फॉर्मूला विच इज द लास्ट वन फॉर एक्स सर्किल्स हियर। ओके, दिस विल बी, ओके, R1 is equal to, just type of this, R is equal to 4R. This is also in 4R, but one thing which is to be remember, these are proved. Okay, all these formulae are proved in respective questions here, and R1 is equal to, first is 4 into capital R, just like this formula. Here it is sin A by 2, undoubtedly sin A by 2, but cos B by 2, cos C by 2. Yeah, it is cos B by 2 into cos B by 2 into cos C by 2. Try to understand. And R2 is equal to, let me write here, R2 is equal to 4 into R into cos A by 2 into sin B by 2 into cos C by 2. अच्छा, इसमें एक साइन होता है जो सेकंड में साइन B by 2 होता है, R1 में साइन A by 2 होता है, बाकी cos होते हैं, cos B by 2, cos C by 2 इन केस ऑफ R1। अच्छा, इसमें R2 वाले केस में सिर्फ cos A by 2 साइन B by 2, सेकंड में साइन B by 2 होता है, थर्ड में साइन C by 2 होगा, बाकी cos A by 2 cos B by 2 भी होगा।
ठीक है। थर्ड टू R3 है, लेट मी राइट हियर। R3 की वैल्यू क्या होती है? R3 वैसी 4 into R, now I have cos A by 2, cos B by 2, sin C by 2। जब R3 में sin C by 2 होता है, R2 में sin B by 2 होता है, बाकी cos होते हैं, इसमें भी बाकी cos होते हैं। ठीक है, याद करना है। 4R R1 में 4R sin A by 2, cos B by 2, cos C by 2, sin A by 2 R1 में होता है, sin B by 2 R2 में होता है, और बाकी cos होते हैं। ये सिर्फ याद रखना। बाकी सब ये तीन टाइप के फॉर्मूले हैं एक्स सर्कल्स के लिए, 3 टाइप के फॉर्मूले हैं इन सर्कल्स के लिए, और 2 टाइप के फॉर्मूले सिर्फ सर्कम सर्कल्स के लिए। तो ये इस तरह से 8 फॉर्मूले हैं, इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपस में हम एक को ड्राइव करते हैं, दूसरा आ जाता है निकल के, इसको भी हम बाद में प्रूव कर सकते हैं। अभी ये 8 फॉर्मूले आप याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्योंकि अदरवाइज टॉपिक काफी बड़े हैं। अभी दूसरा फॉर्म लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है, जिससे मैंने एक साथ लिख दी है, जिससे आपको याद हो। अगर आप एक साथ रख लें इनको, नोट करें, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बहुत यूज होते हैं, इनका याद आना उस समय बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसे याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। ये कहते हैं व्हाट इज एन ऑर्थो सेंटर, व्हाट इज एन ऑर्थो सेंटर of a triangle ABC, or of the triangle ABC, of a triangle ABC, any triangle it can be। इसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, ABC कोई ट्रायंगल। अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अपोजिट साइड्स पर, दैट AL इज द परपेंडिकुलर, BM इज द परपेंडिकुलर, ये M हो, एंड CM। तो ज्योमेट्रिकली आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों ही कॉन्करेंट होते हैं, दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। दिस इज, लेट मी टेक दिस, इसको आप 4 पॉइंट ले लीजिए, और अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये ट्रायंगल